Hello everyone. What are you doing now? Of course, you are preparing for the competitive examination. I have come to know that many of you are preparing for the examination like CAT, MAT, WILP, yeah, NQT, TCS, IGNITE, all these examinations. That is fine. But my question is to all of you guys that whether you are preparing well or not. Are you updated? Do you have any idea that how to crack these kind of examinations? Particularly if I'm talking about the English section, of course, I'll be talking about that. I'm not sure about whether your preparation level is up to the mark. For that particular purpose, this time, I, Nilanjan Bose, the professor of CIMAGE College, have prepared a video session for you. And in this particular session, I'm going to deal with a few questions related to verbal analogy. And that section plays crucial role in the English paper. You can be dead sure about it. I'm getting a lot of queries from the students end कि सर वर्बल एनालॉजी के ऊपर कुछ सेशन बनाइए, कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को बताइए, कैसे डील करना है, कुछ टिप्स शेयर कीजिए. Now your waiting period is over, guys. This time I'm going to present all these. I'm going to in fact fulfill all your demands. So watch the video till the end so that you will get a lot of ideas that what should be your ideal approach to deal with those kind of questions. तो चलिए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं. इसमें कुछ टिप्स के बारे में आपको हम जानकारी देंगे. एट द सेम टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट आई विल बी डीलिंग विद अ क्वेश्चन एंड आई विल लेट यू नो दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस सेशन. So guys, I am going to deal with 4 different kind of tips, and these tips are going to be really beneficial for you. I'm quite sure about it. Let us talk about tips number 1. Determine relationship between the first pair of words. इसमें होता क्या है पहले ये आप जान लीजिए. फर्स्ट 2 पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में आपको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. ये हो सकता है एक दूसरे का सिनोनिम्स हो या हो सकता है एक दूसरे का एंटोनिम्स हो. सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दीज पेयर ऑफ वर्ड्स आर हैविंग, राइट. इन द सेकंड पेयर ऑफ वर्ड्स में वही रिलेशनशिप को आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट. लेट अस टॉक अबाउट टिप्स नंबर 2. Try to read the given words as a sentence so that you can get an idea. अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड से आपका मीनिंग नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्या करो, उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके सोचना शुरू कर दीजिए. अगर उस वर्ड को एक सेंटेंस में हम डालें तो उसका मीनिंग क्या होगा, you will get some idea regarding that. And it's a better idea कि सेंटेंस से समझना आसान होता है, right? Tips number 3. Consider the answer choices first before making a decision. आंसर चॉइस को सबसे पहले आप एक बार एक नजर वहां भी आप लगा लीजिए. आप आंसर चॉइस के एक बार खाली देख लीजिए कि कहीं कोई डिसीजन लेने से पहले आपका आंसर चॉइस कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए. आप दोबारा सोचने का मौका उनको दीजिए. Number 4, adopt the process of elimination. It will be easier for you to get the correct answer. Now, let me tell you one thing, that in the examination hall, your mentality is going to be decided, you're going to be checked, right? तो वहां पे हड़बड़ी में आप कहीं गड़बड़ ना कर दो, उसके चलते हुए आप अगर डेड श्योर ना हो आंसर क्या होगा, you should follow the elimination approach. And what is that? आप जो आंसर स्ट्रेट वे एलिमिनेट होते जाता है उसको आप एलिमिनेट करते जाओ. इट विल नैरो डाउन एक्चुअली, है ना, आपका ऑप्शन को नैरो डाउन कर देगा. फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. हो सकता है उस ऑप्शन का मीनिंग आपको पता नहीं है, बट कंसीडरिंग द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड, एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. एंड इन दैट प्रोसेस यू विल गेट योर करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर एज वेल. सो दीज आर द 4 टिप्स guys, and I'm quite sure that if you follow these 4 tips, definitely you'll be able to crack those kind of questions and those kind of examinations. तो चलिए हम लोग थियोरेटिकल बात तो कर लिए, आपके साथ टिप्स को हम शेयर कर लिए, तो क्या बनता नहीं है एक एक्सरसाइज सॉल्व करना? बिल्कुल बनता है. तो चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, एंड आई विल लेट यू नो दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, एंड यू विल प्रैक्टिस विथ मी, एंड आई कैन गिव यू गारंटी अबाउट इट दैट एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्बल एनालॉजी. सो जस्ट वेट. So here comes the first question. Benign is to modest, then green is to what? देखो यहाँ पे आपका vocab एक up to the mark होना चाहिए. Benign means the person who is very much modest, down to earth. जो बंदा down to earth होते हैं उसको benign बोलते हैं. And the same meaning is applicable in the second word, modest. So modest and benign in the synonyms category, right? This particular relationship is going to be established in the second pair of words. जैसे कि green. If somebody is grinning, it means that he is having a broad smile on his face. अगर कोई green कर रहे हैं मतलब उसमें broad smile दे रहे हैं, ठीक है. अगर कोई broad smile दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं he is grinning or she is grinning.
सो ग्रीन का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड, सिनोनिमस वर्ड क्या होना चाहिए? ब्रॉड स्माइल. करेक्ट. Let us move to question number 2. Loath is to unwilling. Then putrid is to what? Loath मतलब होता है if somebody is not interested to do any kind of work. मतलब अनिच्छुक अगर कहा जाए तो. And that is the meaning of the word unwilling too. So loath and unwilling, once again synonymous relationship. This relationship is going to be implemented in the second pair of words. यहाँ पे लिखा हुआ है putrid. Now, what do you mean by putrid? If an object is said to be putrid, it means that it is decaying or decomposing. So, putrid का और एक synonymous word हम लोग क्या लिख सकते हैं? Either you can write decaying or you can also select decomposing. In this particular session, I haven't given you any options. Rather, we'll be discussing, we'll be practicing, and we will come to know that what should be the exact synonym of this particular word, right? So, loath is to unwilling, then putrid is to decomposing, yeah, decaying. So we are done with two different kind of questions, guys, and I'm quite sure that all of you are understanding what I'm trying to deliver to you. Let us move to question number 3 and 4. Now, timid is to intrepid. This is question number 3. Timid मतलब क्या होता है? डरपोक. और intrepid, a person who is fearless. तो जहां डरपोक की बात करें और एक साइड से हम fearless की बात कर रहे हैं, of course एंटोनिम है, of course opposite word है, ये तो आपका भी common sense है, right? The same relationship is going to be implemented in the second pair of words. Pastoral is to what? ठीक है. So timid is to intrepid अगर हुआ, so pastoral is to क्या होना चाहिए? Pastoral is to होना चाहिए urban. जो पैस्टोरल मीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू विलेज, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं रूरल, तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? उसका अपोजिट होना चाहिए अर्बन. सो टिमिड इज टू इंट्रेपिड, देन पैस्टोरल विल बी रिलेटेड टू अर्बन बिकॉज दीज आर अपोजिट रिलेशनशिप. Okay, fine. Let's move to question number 4. Morose is to happy, then alleviate is to what? Morose के साथ happy का क्या रिलेशनशिप है? Morose का मतलब होता है gloomy या sad, उसका अपोजिट हो गया happy. Of course, the same relationship is going to be implemented in the second pair of words. Alleviate मतलब कम करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाना चाहिए? कोई चीज और बढ़ जाना. तो यहाँ पे you can write aggravate. So morose is to happy, then alleviate is to aggravate, and that should be the correct answer, right? So we are done with 4 different kind of questions. Let us solve a few more so that you will be pretty much confident to face these kind of questions. Just wait. Now here comes the question. Demean is to eulogize. अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि डिमीन का मतलब क्या हो रहा है और यूलोजाइज का मतलब क्या हो रहा है. डिमीन मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, और यूलोजाइज मतलब क्या होता है? यूलोजाइज मतलब होता है कि किसी चीज का प्रशंसा करना. सो नाउ किसी को नीचा दिखाना और किसी का प्रशंसा करना, अगर ऐसा कुछ वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करें, ऑफ कोर्स देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज कमिंग टू माय माइंड, एंड दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. किसी को नीचा दिखाना और किसी का प्रेज करना आइडेंटिकली ऑपोजिट है, ठीक है ना? एग्जैक्टली ऑपोजिट है दोनों. तो यहाँ एनिमोसिटी के साथ कौन ऐसा वर्ड को हम सिलेक्ट करें जो इसका ऑपोजिट होगा? अगर मान लीजिए एनिमोसिटी इज द वर्ड, सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि एनिमोसिटी वर्ड का मीनिंग क्या है. अगर हम सोचते हैं ये वर्ड एनिमोसिटी, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू नो? ये होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा वाला कोई फील करना, कोई इमोशन को जताना. तो इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम लोग करें तो वहां पे आप क्या सोचोगे? उसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? किसी के तरफ अफेक्शन को दिखाना, किसी के तरफ केयरिंग एटीट्यूड को दिखाना, गुस्सा नहीं दिखाना, एक फ्रेंडली एटमोस्फियर को क्रिएट करना. एनिमोसिटी इज द फ्रेंडली, यहाँ पे अफेबिलिटी भी लिख सकते हैं, राइट? Now, moving to question number 6. Salubrious is to unhealthy, then obdurate is to what? Salubrious का मतलब यहाँ क्या हो जाता है? Unhealthy और salubrious दोनों synonymous word है. यहाँ पे salubrious मतलब not synonymous, sorry, salubrious मतलब होता है healthy या hygienic, और unhealthy उसका ठीक उल्टा हो गया. करेक्ट. सो ऑब्ड्यूरेट का उल्टा क्या हो जाएगा? जो रिजिड होते हैं, ऑब्ड्यूरेट मींस रिजिड, सो रिजिड का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? रिजिड का ऑपोजिट होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल नेचर के हो, राइट? सो सैलुब्रियस इज टू अनहेल्दी अगर हम बोले तो ऑब्ड्यूरेट इज टू क्या हो जाना चाहिए? ऑब्ड्यूरेट इज टू फ्लेक्सिबल, राइट? सो वी आर डन विद 6 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस सो दैट यू कैन बी फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट. Now let us talk about the question number 7. Noxious is to efficacious. So my students, noxious मतलब होता है harmful, nefarious, right? And efficacious is
इफेक्टिव या फ्रूटफुल, तो दोनों तो ऑपोजिट हो गया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bemused? bemused मतलब होता है कंफ्यूज. तो कंफ्यूज का ऑपोजिट क्या होगा? द पर्सन हु इज नॉट कंफ्यूज. इट मींस दैट ही इज एब्सोल्युटली sanguine या certain. So it can be certain, it can be sanguine as well. So noxious is to efficacious antonym and bemused is to sanguine. Once again, antonym. Now moving to question number 8. Mendacious is to truthful. Mendacious होता है जो false है और truthful होता है जो सच है, सच बोलते हैं, right? So once again you are having the antonym relationship. इधर laconic हो गया. laconic मतलब क्या होता है? brief, संक्षिप्त. तो उसका opposite क्या हो जाना चाहिए? जो elaborative हो, जो descriptive हो, right? जो elaborative हो. It should be the better answer. So mendacious is truthful, then laconic will be, laconic is too, it should be elaborative. So that is the answer. Now, guys, I am quite sure that all of you must have understood that in which way you need to proceed. Either the words will be in the same category like synonym, or it can be the opposite one. In the next pair of words, you have to apply the same rule and you have to find out whether it should be synonym or the antonym of that particular word. I'm quite sure that all of you must have understood, you have enjoyed the session, and keep on just practicing, guys. This is the key to success. There is no shortcut about it. Try to enhance your vocab, keep on practicing, and definitely it will come off with flying colors in the examination. I'm quite sure about it. So that's all from my side today in this particular video session. Watch out for my next video, and in that particular video, I'll be presenting more interesting things related to competitive examination. And I'm pretty sure all of you will be doing really, really well. Take care. Bye-bye. Thank you so much.